जगं ब्रह्मादि प्रार्थना प्राप्त दिव्यमानुष विग्रहं भक्तानुग्रह एकांत शांत स्वांत समुज्ज्वलं सर्वज्ञं संयमेन्द्राणां सार्वभौमं जगद्गुरुं किंकरीभूत भक्तैः पंकजात विशोषणं शंकरं सर्वलोकानां शंकराचार्यमाश्रये। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्राणानायम्य अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो ममोपात्य समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव अद्य करिष्यमाणस्य कर्मणः आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये अक्षतानुत्तरधो निरस्य आगमात् सन्तु देवानां गमनात् सन्तु रक्षसाम् कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठैरुद्दशमाश्रितः मूले तत्त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ दशाकरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अङ्गे सहिता सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आयान्तु गुरुपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्घजलेन महागणपति बिम्बम् अस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। गणपति बिम्बं संस्थाप्य बिंबमूले ओं गां अनंताय नमः, ओं गां धर्माय नमः, ओं गां ज्ञानाय नमः, ओं गां वैराग्याय नमः, ओं गां ऐश्वर्याय नमः, ओं गां पद्माय नमः पद्मस्योपरि गं गणपत्यासनाय नमः, गं गणपतिमूर्तये नमः। ओं एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं महोदरं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकम्। अस्मिन् हरिद्रां महागणपते नमः। विद्यादेहाय नमः। नेत्रेभ्यो नमः। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। अस्मिन् हरिद्राबिम्बे सुमुखं महागणपतिं ध्यायामि, महागणपतिम् आवाहयामि। महागणपतये नमः। रत्नमयसिंहासनं समर्पयामि। महागणपतये नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। महागणपतये नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। महागणपतये नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। स्नपयामि। आपोहिष्टामजो भुवस्थान ऊर्जे तधातन महेरणागचक्षसे यो पश्यपतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षजा गजन्वथ आपो जनयथा जनः। महागणपतये नमो नमः। स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि। वस्त्र उपवीत आभरणार्थे अक्षदान् समर्पयामि। महागणपतये नमः। दिव्यगन्धान् धारयामि। गन्धस्योपरि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि। इमानि अक्षतानि समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पैः सम्पूजयामि। ओं सुमुखाय नमः। ओं एकदन्ताय नमः। ओं कपिलाय नमः।
ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧೂಮಕೇತವೇ ನಮಃ ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಳ ಪತ್ರಪುಷ್ಪಾರ್ಚನ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ಓಂ ದಶದ್ರವ್ಯ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸುಗಂಧಂ ಸುಮನೋಹರಂ ಆಗ್ರೇಯ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಧೂಪೋಜಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ಧೂಪಾನಂತರಮಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸಾಜ್ಯಂತ್ರವತ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಮನ್ಹಿನಾ ಯೋಜಿತಂ ಮಯಾ ಗೃಹಾನಮಂಗಳಂ ದೀಪಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತಿಮಿರಾಪಹಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ದಿವ್ಯಮಂಗಳದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ದೇವಸವಿತ ಪ್ರಸುಭ ಸತ್ಯಂ ದತ್ತೇನ ಪರಿಷಿಂಜಾಮಿ ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸಿ ಅಮೃತಂ ಭವತು ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಾಹ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ನಾಳೀಕೇರಖಂಡಾನಿ ಕದಲೀಫಲಾನಿ ಕಾಶ್ಮೀರಫಲಂ ಚ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಹಸ್ತಪ್ರಕ್ಷಾಳನ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಳನ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಗಂಡೂಷಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಊಗೀಫಲಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾಗವಳ್ಳೀದಲೈರ್ಯುಧಂ ಕರ್ಪೂರಜೋನ ಸಂಯುಕ್ತಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಕರ್ಪೂರತಾಂಬೂಲಂ ಚ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನೀರಾಜನಂ ಓಂ ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ತುಲಂಬೋದರಾಯ ಗದಂತಾಯ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ ಶುಭಸುಧಾಯ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತಾಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಮಂಗಲನೀರಾಜನಂ ಸಂದರ್ಶಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ರಕ್ಷಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಮೂರ್ತಿಗೀ ಮಮೋಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿದಕ್ಷಯದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಶಂಭೋಃ ಆಜ್ಞೆಯಾ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿತಮೇ ಪ್ರಥಮೇ ಪಾದೇ ಭಾರತವರ್ಷೇ ಖಂಡಕಾರಣ್ಯೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನೆ ಪ್ರಭವಾದಿ ಮಂಗಳಕರ ವಿಶ್ವಾಸುನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ವಸಂತ ಋತೋ ಮೇಷಮಾಸೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೆ ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ಶುಭತಿಥೋ ವಾಸರಃ ವಾಸರಸ್ಥೋ ಭೃಗುವಾಸರ ಸಂಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಆರುದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಶುಭನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭಯೋಗ ಶುಭಕರಣ ಏವಂ ಗುಣಸಕಲ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಅಸ್ಯಾಂ ವರ್ತಮಾನಾಯಾಂ ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ಶುಭತಿಥೋ ಅಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ವಿನಾಯಕಾದಿ ಸಪರಿವಾರ ಸಹಿತಸ್ಯ ಆದಿಗುರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಜ್ಞಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಪ್ರಸಾದ ಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ 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 ಓಂಕಾರಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತ್ಯವಧೂತ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನಾಮನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಿದ್ಧಿದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಚಿದ್ಭವಾನಂದಾಶ್ರಮತಿ ನಾಮಾಂಗಿರೇ ಸಂಸ್ಥಾನೆ ವಿದ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ ಜಿಜ್ಞಾಸೂನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರಶೀಲಾನಾಂ ವೇದಪಾಠಶಾಲಾಯಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀನಾಂ ಅಧ್ಯಾಪಕಾನಾಂ ಆಶ್ರಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ವಾಹಕಾನಾಂ ಆಶ್ರಮೇ ವಿದ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಕೈಂಕರ್ಯಪರಾನಾಂ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತೇಶ್ಚ ಶ್ರೀಗುರು ಸೇವಾ ಸಮಿತೆ ಶ್ರೀಗುರು ಸೇವಾ ನಿಧಿ ದಾನಶೀಲಾನಾಂಚ ಆದಿಗುರು ಸೇವಾನಿಧಿ ದಾನಶೀಲಾನಾಂಚ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀನಾಂಚ ದರ್ಶನಂ ಕುರ್ವತಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭಕ್ತ ಮಹಾಜನಾನಾಂಚ ಕ್ಷೇಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅರೋಗ ದೃಢಗಾತ್ರದಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ವೇದೋಕ್ತಂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಆಲಸ್ಯ ರಹಿತ ತಂದಾರಹಿತ ನಿರಂತರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಆಶ್ರಮೇ ಅನ್ನಪಾನಾದಿ ಸಮೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಗುರು ಈಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಷು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಚಂಚಲ ನಿಷ್ಕಪಟ ನಿಷ್ಠಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣ ಮರಣ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನೇಷು ನಿಷ್ಠಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪರಿಪೂರ್ಣದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಲೇನ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ತದ್ವಾರ ಜನ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಪ್ರಸಾದ ಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ವಿಶೇಷತಃ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿಮುದ್ದೇಶ್ಯ ಕ್ರಿಯಮಾನ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರೈಃ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ಅಪೋಪಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಯಥಾಸ್ಥಾನಂ
प्रतिष्ठापयामि। प्रफलाद्य क्षेमाय पुनरागमनाय च अर्घ्यजलेन चित्रम् अस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य कुण्ड्य ओम हां अनन्ताय नमः, हां धर्माय नमः, ऐश्वर्याय नमः, पद्माय नमः। ओम शंकर भगवत्पादाचार्यासनाय नमः, श्रीमत् शंकर भगवत्पादाचार्य मूर्तये नमो नमः। ध्यानं कैलासाचल मध्यस्थं कामिदाभीष्टदायकं ब्रह्मादि प्रार्थना प्राप्त दिव्यमानुष विग्रहं भक्तानुग्रहनैकान्त शान्त स्वान्त समुज्ज्वलं सर्वज्ञं संयमेन्द्राणां सार्वभौमं जगद्गुरुं किङ्करीभूत भक्तैनः पंकजात विशोषणं शङ्करं सर्वलोकानां शङ्कराचार्यमाश्रये। ओम भूर्भुवस्वरोम् अस्मिन् चित्रपटे श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिनं ध्यायामि। सद्गुरो शंकराचार्य रूपांतरित विग्रह साक्षात् श्री दक्षिणामूर्ते कृपया आवाहितो भव। श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिनं आवाहयामि। आसनम् आर्याम्बागर्भसम्भूत मात्रवात्सल्यवान् भाजन मातृदेवतदाम्येतद् रत्नसिंहासनं शुभं। श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। आसनं समर्पयामि। पाद्यं विद्याधिराज सत्पौत्र विद्या व्यासंगतत्पर विश्वविख्यात वैदुष्य पाद्यं एतत्तदाम्यहम्। श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्यं शिवकुर्वन्वयाम्बोधि शरत्पर्व निशाचर शिवावतार भगवन् गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमो नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। आचमनीयं दरिद्र ब्राह्मणी सत्म स्वर्णामलकवर्षक विस्माभग स्वात्मवृद्ध तदाम्याचमनीयं तदाचमनीयकं। श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। जननी समनुज्ञात संन्यासाश्रम संग्रह गंधर्वशाप शमन मधुवर्गं ददामि ते। श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। मधुवर्ग स्नानं समर्पयामि। गोविंद भगवत्पाद पादसेवा धुरंधर महावाक्योपदेशाढ्य स्नाहि पंचामृतद्रवैः। श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। पंचामृत स्नानात्मक्षदान् समर्पयामि। वाराणसीपुरी रम्य गंगाधीर निषेवक गंगादितीर्थै श्रीरुद्र मंत्रैस्त्वां स्नपयाम्यहं। श्री शंकर भगवत्पादाचार्याय नमः। स्नपयामि। अपोहिष्टामजोहुपस्थान ऊर्जे दधातन यो व शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षजा गजन्वथ। स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि। वस्त्रं भाष्य भागीरथीपादः पवित्रीकृतभूतल भाष्य प्रवचनासक्त वस्त्रयुग्मं ददामि ते। श्री शंकर भगवत्पादाचार्याय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। गंधं सनंदनादि मेधावी पंडित छात्र संवृत सर्वशास्त्रार्थ निपुण गंधान् धारय साधरं। श्री शंकर भगवत्पादाचार्याय नमः। गंधान् धारयामि। भस्मोद्धूलनं वृत्तवेश प्रतिच्छन्न व्यास संदर्शनोत्सुक भस्मोद्धूलित सर्वांग भस्म दिव्यं ददामि ते। श्री शंकर भगवत्पादाचार्याय नमः। भस्मोद्धूलनं समर्पयामि। कुङ्कुमचूर्णं व्यासदत्तवर प्राप्त षोडशाप्ता उज्ज्वल किङ्करीकृत भूपाल कुङ्कुमं ते ददाम्यहं। श्री शंकर भगवत्पादाचार्याय नमः। कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि। रुद्राक्षमालिका श्रीमन्मण्डनमिश्रादि वादकेलि विशारद दुर्वाददूलवातूल भज रुद्राक्षमालिकां। श्री शंकर भगवत्पादाचार्याय नमः। रुद्राक्षमालिकां समर्पयामि। पत्रपुष्पं श्रीमन्मण्डन कर्णोक्त महावाक्यादिमन्त्रक सुरेश्वराख्या संतायिन् बिल्वपत्रं ददामि ते।
ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕಾ ಸುರೇಶ ಪದ್ಮಚರಣ ಹಸ್ತಾಮಲಕ ತೋಡಕೈಃ ಅನ್ಯಶ್ಚ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಂವೀತ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾಂ ದದಾಮಿದೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಓಂ ಶಿವರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಕ್ತಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರಸ್ವತೀರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಣಪತಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಷಣ್ಮುಖರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಪೂಜಾ ಓಂ ಶಿವರೂಪಾಯ ನಮಃ ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾರ್ಚನ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುಜ್ಞಾನಾಂಬುಧಿಚಂದ್ರಮಸೇ ನಮಃ ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮತೆ ನಮಃ ಓಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿಷ್ಯೋಪದೇಶನಿರತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ವರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಖ್ಯಸಚ್ಚಿಷ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನೃಸಿಂಹಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸತ್ರತ್ನಗರ್ಭಹೇರಂಬಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾರ್ಚನ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಕ್ಷತ್ರಂ ದೇವಮಿಂದ್ರಿಯಂ ವಿರಾಸಂಜುಹೋತನ ವಿಶ್ವಾಭುವನಾನಿ ಸರ್ವಾ ಭಿನ್ನೋ ದೇವಸ್ಸುಭಿದೇ ದಧಾತು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಓಂ ಯೋ ವೇದಾದೌ ಸರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೇನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಿತಯೀ ಭಾಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣೈಕ ವಿಶಾರದ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರೋತ್ಸಾರಿನ್ ಪಶ್ಯ ನೀರಾಜನ ಪ್ರಭಾ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಂಬತರಮಾನದೋಸ್ಮಿ ಕೀಲಶಾಸ್ತ್ರಸುಧಾ ಜಲತೆ ಮಹಿತೋಪನಿಷತ್ಕಥಿತಾರ್ಥನಿಧೇ ಹೃದಯೇ ಕಲಯೇ ವಿಮಲಂ ಚಲನಂ ಭವಶಂಕರದೇಶಿಕಮೇ ಶರಣಂ ನಾವರುಣಾಲಯ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಭವಶಾಕರ ದುಃಖವಿದೋ ನಹತಂ ತಯಾ ಕಿಲ ದರ್ಶನ ತತ್ವವಿದಂ ಭವಶಂಕರದೇಶಿಕಮೇ ಶರಣಂ ವಿದಿತಾನ ಮಯಾ ವಿಶದೈತ್ಕಕಲಾ ನ ಚ ಕಿಂಚನ ಕಾಂಚನಮಸ್ತಿ ಗುರೋ ದುತಮೇವ ವಿದೇಹಿ ಕೃಪಾಂ ಸಹಜಾಂ ಭವಶಂಕರದೇಶಿಕಮೇ ಶರಣಂ ಕರದೇಶಿಕಮೇ ಶರಣಂ ಭವಂಬಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಂ ಪರಂಪರಾಂ ತಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ. ஸ்ரீ சங்கர சரிதம். அந்த பிரசவ அறை தீபத்தை விரும்பவில்லை. இரவில் தீபம் இல்லாமலேயே அந்த குழந்தையினுடைய உடலின் ஒளியினாலேயே இருள் நீங்கியதாகவும் மிகவும் ஒளியுள்ளதாகவும் இருந்ததனால் எல்லோருக்கும் வியப்புண்டாயிற்று. கண்ணுற்றவர்களுக்கு சிறந்த சுகத்தை அளிப்பதனால் தந்தை புதல்வனுக்கு சங்கரன் என்று பெயர் அளித்தார். மேலும் புதல்வன் தோன்றாமல் துக்கத்தை உய்த்த தமக்கு தேவாதி தேவனாகிய சங்கரனுடைய அருளினால் தோன்றியது பற்றியும்
அவ்வாறு பெயரளித்தார். எல்லாம் அறிந்தவராயினும் குழந்தை பருவத்தில் உள்ளமையால் மனிதத்தன்மையை அனுசரித்து அதன்படி செயலாற்றினார். கிரமமாக சிரிக்கத் தொடங்கினார், தவழ்ந்தார், பிறகு கால்களால் நடந்தார். குழந்தை கட்டிலில் படுக்க வைக்கப்பட்ட சமயத்தில் சாதுக்களுடைய மனம் ஆனந்தமடைந்தது. மேலே தொங்குகின்ற ரசகுண்டு, முத்து முதலியவைகளை பார்க்கும் பொழுது மற்ற வித்வான்களுடைய முகம் ஒளி மங்கியதாயிற்று. ஆச்சரியம்! அழகிய படுக்க அமைந்த சிறந்த கட்டிலை கால்களால் உதைத்தார். அதனால் வேற்றுமைவாதம் கூறுகின்ற மற்ற மதஸ்தர்களுடைய மனத்தில் உள்ள கொள்கைகளின் கூட்டங்களை பல தூளாக துண்டித்தார். அந்த பாலன் 2, 3 எழுத்துக்களை உரைக்கும் பொழுது துவைத்த வாதிகள் மௌனம் அடைந்தனர். பாத கமலங்களால் நடக்கத் துவங்குகையில் அவர்கள் பயமுற்று 10 திக்குகளிலும் பறந்தனர். இந்த பாலன் சொற்களை உரைத்தார், பிறகு கால்களால் நடந்தார். அவைகளில் முதலாவதினால் சொற்சுவையால் குயில் கூட்டம் குறையுற்றது. 2வதினால் நடையழகினால் அன்னப்பறவை குறையுற்றது. சரத்காலத்து சந்திரன் போல் ஒளியுடைய அவர் மெதுவாக நடக்கும் பொழுது தம் பாதங்களுடைய காந்தியினால் பூமியை புதிதாக பவழத் தளிர்களை பரப்பியது போலவும், இரத்த சந்தனத்துள் பரவியதனால் சிறப்பு நிறம் உள்ளது போலவும் செய்தார். தலையில் சந்திரனுடைய குறியையும் நெற்றியில் கண்ணின் குறியையும் தோள்களில் சூலாயுதத்தின் அடையாளத்தையும் உடலில் ஸ்படிகத்திற்கு நிகரான நிறத்தையும் கண்ணுற்று புத்திமான்கள் அவரை ஷம்பு, சிவன் என்று தீர்மானம் செய்தனர். சூதாட்டம், வேட்டை, மதுபானம், அதிகமாக ஸ்திரீபோகம் ஆகியவைகளிலிருந்து விலகி ராஜ்யத்தை ஆளும் நீதியினால் சிறந்த அரசனுடைய ராஜ்ய லக்ஷ்மி போலவும், தீய செயலை விலக்கிய அறிஞனுடைய கல்வி போலவும், சரத்காலத்து சந்திரனுடைய காந்தி போலவும் அவருடைய மேனி தாய் தந்தையருடைய சந்தோஷத்துடன் வளர்ந்தது. மார்பில் பாம்பின் வடிவமும், காலில் சாமரமும், நெற்றியில் இளஞ்சந்திரனும், கைகளில் சக்கரமும், கதை, வில், டமருகம் என்றவைகளும், தலையில் சூலமும் ஆகிய கோடுகள் அமைந்த அவருடைய அழகிய மேனியை வியப்புற்றவர்களாக இமை கொட்டாத கண்களால் ஜனங்கள் பார்த்தனர். முதல் சிருஷ்டியாகிய சனகாதிகளுடைய ஞான மார்க்கம் ஓய்வடைந்து துஷ்ட மார்க்கம் நிலைக்கையிலும் ஸ்வர்க்க மார்க்கம் கிட்டாமல் இருக்கையிலும் மோட்ச மார்க்கம் அடையாமல் இருக்கையிலும் பிரம்ம சிருஷ்டியாகிய பிராணிகளின் கூட்டம் தூய்மை நீங்கியதாக நிலவுகையில் எல்லா நன்னெறிகளும் பாழடைந்திருக்கையில் சிவபெருமான் அந்த பால வடிவத்தில் பூமியில் அவதரித்தார். हर नमः पार्वती पतये।
ओम ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां जये गुरोगिनां जये सर्वविद्यानां दक्षिणां गुरवे नमः ओंकारानन्दं ब्रह्मेन्द्रं ओंकारसर्वदर्शिनं बोधमहं वन्दे ज्ञाननिर्बोधकल्मषम् सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। Oh